Hello students, welcome again in maths classes. You know that we have finished chapter 1, okay? Exercise 1.1 and 1.2. In this video, I am going to tell you some basic concepts of chapter 2. Then we will solve the exercises of this chapter. This chapter is all about linear equations in one variable. Now before we solve some examples and questions, I am going to tell you few definitions and methods to solve linear equations. Okay, so be with me. I am going to cover few concepts and definitions. All right. So before we discuss linear equations, just learn something that is related to this topic. There is mathematical statement. Okay, what is a mathematical statement? See, if 3 plus 2 is 5, it is a mathematical statement. 8 plus 5 equals 13. 4 into 2 equals 8. These are the mathematical statements. Okay, but if a mathematical statement is true, then it is called a mathematical sentence. Maybe it is true or false. दोनों नहीं हो सकते, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. So if a mathematical statement is either true or false, it is called a mathematical sentence. Then comes expression. See, x plus 2, x upon 5, x into 10, x minus 100, x 7. These all are mathematical expressions. So what is an expression? When a variable and constant both are combined together by the help of some arithmetic operators, as you are watching, then we get a mathematical expression. X alone is an expression, 5 alone is also an expression. Okay, now comes equations. Before we discuss linear equations, you must have an idea about equation. An equation is the statement of equality of two expressions. For example, x plus 2 is 15, x minus 1 is 3, x upon 2 equals 14. In this way, these are the equations. Now, what is a linear equation? You can see in these examples, the highest power of x is only 1. So these are called linear equations. Okay, and there is only one variable. So in this chapter we are going to discuss linear equations in one variable as given in your book. So from your textbook, this is the chapter 2nd. Okay, linear equations in one variable. So finally, what is a linear equation? An equation involving one or more variables whose highest power is 1 is called linear equation. And in this chapter, we will discuss the linear equations in one variable only. Means it may be the variable x or variable y or variable z. But most probably हम जो भी equations create करते हैं वो x को consider करके करेंगे. So what is x here? X is a variable. It is called literal also. x एक ऐसी क्वांटिटी है जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है. सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, नेक्स्ट इज सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस. देयर आर फ्यू मेथड्स. फर्स्ट इज बैलेंसिंग द इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ओके, सेकंड इज ट्रांसपोजिंग द टर्म्स एंड थर्ड इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चंस वी विल यूज either of these as our convenience, but it depends on the question. आप कोई भी मेथड से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, बट जो भी कन्वीनियंट लगेगा हमें क्वेश्चन को देखकर हम वही मेथड यूज करेंगे. ओके, नाउ देयर इज अनदर टर्म, रूट्स ऑफ द इक्वेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स? रूट्स मीन्स सिंपली द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x which will satisfy the given equation. For example, x minus 2 is 18, so x will be 20.
this value is called the root of this equation. So x equals 20 is the root of the equation. You can say the solution. Okay students, now focus on the board. So the chapter is linear equations in one variable. This is exercise 2.1. I am going to solve some questions from this exercise. This is on page number 33. Solve the following equations. First question is x minus 2 equals 7. Students, as you know, I have told 3 methods to solve a linear equation. Then we will discuss them one by one according to the questions. Okay, the very interesting chapter it is. Okay, so x minus 2 is 7. Now we have to find the value of x. So x will be, you can transpose 2 minus 2 on the right hand side, it becomes positive. Okay, whenever you transpose the terms, just consider few points. A negative value is transposed to other side, it becomes positive. A positive value transposed to other side, it becomes negative. The multiply becomes division and the division becomes multiply. It doesn't depend when we transpose the terms to left or to the right. Okay, then x equals 9. It's very simple. Okay, so this is the solution. Second, y plus 3 equals 10. Again we have to find the value of y. So for that variable we are going to find, let it be on the left hand side and transpose all the terms on right hand side. So 10 will be as it is and this plus 3 becomes minus 3, y is 7. Third question is 6 equals z plus 2. Again we have to find z. So you might be thinking that z is on right hand side. Doesn't matter, let it be on right hand side. Okay, because if we transpose z to left hand side, it becomes minus z, but we have to find z only. So 2 can be transposed to left hand side, 6 will be as it is. Z equals, actually it is 4 equals z, but you can speak z equals 4 because ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हैं. आप 4 इक्वल टू z भी बोल सकते हैं और z इक्वल टू 4 भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दोनों क्वांटिटी इक्वल है. सो यू कैन से z इक्वल्स 4. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दीज क्वेश्चंस आर द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. इनसे इजी इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं होगा एंड आई होप you have no doubt. So pause the video and note. This exercise is very easy. Okay, question number 4 is 3 upon 7 plus x equals 17 upon 7. Now you can see that there are fractions. Okay, 3 upon 7 and 17 upon 7. What to do? अभी मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे, उनमें से एक मेथड यूज करेंगे. ओके, इसको हम बैलेंस करेंगे. आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. यू कैन ट्रांसपोज 3/7 टू राइट हैंड साइड, देन टेक द एलसीएम, डजंट मैटर. और यू कैन मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 7 बिकॉज द डिनोमिनेटर इज 7. सो जो भी डिनोमिनेटर होता है हम उसी से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं. वाई वी डू सो, जिससे कि 7 यहाँ से हट जाएगा. Okay, we want to remove 7. Now multiply the whole equation by 7. Multiply by 7.
on both sides. So 7 into 3/7 plus x into 7 equal to 7 into 17/7. ओके, लिसन, इस टर्म को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है, इस टर्म को भी किया है और इसको भी किया है. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ ईच टर्म. This is a term, this is a term, this is also a term. 7 is cancelled, it is 3, it is 7x and 7 is also cancelled, so it is 17. Now 7x equals 17 minus 3. Because we want to find the value of x, तो जिस टर्म के अंदर x की वैल्यू होती है, जिसमें x एग्जिस्ट करता है, उसको हमें बिल्कुल टच नहीं करना है. 7x को ऐसे ही रहने देना है, 3 को ट्रांसपोज करना है, इट बिकम्स नेगेटिव ऑन राइट हैंड साइड. ओके, सी दिस इज एन इक्वल साइन, दिस इज इक्वल साइन एंड इट इज 7x. 3 will be transposed to right hand side, it becomes negative. Then 7x equals 14. Okay, after this you know there is a multiplication, that is 7 into x. So if you find value of x, the 7 becomes denominator on the right hand side. अभी मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई डिवीजन में कन्वर्ट होता है और डिवीजन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, तो ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवीजन में कन्वर्ट होगा. एंड x इक्वल्स 2. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. बट there is more important thing than finding the solution. What is that? You must cross check your answer. आपको अपना आंसर चेक कर लेना है, ठीक है. If x equals 2 means this is the solution of this. So अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो LHS equals RHS होना चाहिए, करेक्ट. So I am going to check. You pause the video and note down. Okay. But this is not the part of फेयर वर्क. आपको क्रॉस चेक रफ में करना है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एग्जाम में आपके पास ये बुक नहीं होती है ना, आप सॉल्यूशंस कहीं देख सकते हैं. सो आप कैसे श्योर करेंगे आपका आंसर करेक्ट है? दैट x इक्वल टू 2 इज पुट हियर 2 and it is 17. Now on this side you can take LCM. So by the short method 7 2 जा 14 and plus 3 17. 17/7 on the left hand side and right hand side. So both the values are equal. It means 2 is right. जो x की वैल्यू 2 थी वो करेक्ट है. ओके, सो इन दिस वे यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर. Now I solved 4 questions of this exercise. Okay students, so I hope this is very interesting, very easy. So solve the remaining questions and solve these also without seeing the video. आपको वीडियो को देखे बिना, ठीक है, एक बार वीडियो कंप्लीट देखना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद बिना वीडियो को देखे आपको ये क्वेश्चन फिर से सोल्व करने हैं रफ नोटबुक में, फिर आप इनको फेयर कॉपी में कर सकते हैं. ओके, बिकॉज यहाँ से कॉपी करके आप करेंगे आपको कम समझ में आएगा. Solve the questions by your own hand. Okay students, have a good day.